Hello friends, welcome to Angel's Learning. In this video, I'm going to discuss the easiest way to draw and write the formulas and structure of the oxoacids of the phosphorus. So let's get started. Firstly, let us see what does this word oxoacid means. Oxoacids are the acids which contain ऑक्सीजन. सो ऑक्सो एसिड वो एसिड्स होते हैं जो ऑक्सीजन कंटेन करते हैं. एंड द एलिमेंट फॉस्फोरस इज नॉन टू फॉर्म अ नंबर ऑफ ऑक्सो एसिड. जो हमारा एलिमेंट फॉस्फोरस है वो बहुत ज्यादा ऑक्सो एसिड्स को फॉर्म करने की टेंडेंसी रखता है. एंड those oxoacids of phosphorus are interrelated by loss or gain of water molecule or oxygen atom. जो ये ऑक्सो एसिड्स हैं फॉस्फोरस के वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है इन टर्म्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन एटम लॉस और गेन. एंड नाउ लेट अस सी हाउ we can describe this interrelation. So there are three terms, meta, pyro and hypo, which describes the interrelation between the oxoacids of the phosphorus. Now let us see what does these three terms means. Meta, pyro and hypo. Now the word meta means the loss of one water molecule. Okay, and the word pyro means when two molecules of some compound combines and undergoes condensation reaction, and then the loss of water molecules occur to form a new compound, and that new compound is named by the term pyro. Okay, and now see what does this word hypo means. Hypo means loss of one oxygen atom. Okay, now let us see what are the some important points of the oxoacids of the phosphorus. Number one, in oxoacids of phosphorus, phosphorus is surrounded by other atoms in the tetrahedral arrangement. So जो हमारे ऑक्सो एसिड्स हैं उसमें जो फॉस्फोरस है वो कैसी है, उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम है वो उसके सराउंडिंग में टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट से सराउंड करते हैं उसको. ओके, नाउ दिस यूनिट which is consisting of one double P double bond O and POH is common to all oxoacids of the phosphorus. Okay, this term is common to all oxoacids of phosphorus. जो ये टर्म है ये हर एक ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस में आपको देखने को मिलेगी. सो उनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त हमें सबसे पहले यही ड्रॉ करनी है. ओके, सो द थर्ड पॉइंट इज, अब पी डबल बॉन्ड ओ और पीओएच लिंकेज के अलावा हमारे ऑक्सो एसिड में कौन से लिंकेजेस हो सकते हैं. सो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन बॉन्ड की लिंकेज हो सकती है, पीएच बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, पी लिंकेज हो सकती है अगर हमारे ऑक्सो एसिड में मोर देन वन फॉस्फोरस एटम प्रेजेंट है, एंड द थर्ड इज पीओएच लिंकेज. Now this is the important point, and sometimes question asked from this as well in many competitive exams. Okay, so the point is कि जो pH bond होता है इसका जो हाइड्रोजन होता है वो आयनाइजेबल नहीं होता. The hydrogen of pH bond is not ionizable. Okay, जो हाइड्रोजन डायरेक्टली फॉस्फोरस से अटैच है वो आयनाइजेबल नहीं है, एंड दिस pH इज रिस्पॉन्सिबल फॉर reducing nature of the acid. जिस भी एसिड में नंबर ऑफ pH bonds ज्यादा हैं वो उतना ही स्ट्रॉन्ग reducing एजेंट होगा. ओके, नाउ द हाइड्रोजन ऑफ POH bond is ionizable. ये आयनाइजेबल हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है. ओके, एंड दिस
hydrogen is responsible for basicity. Okay, this hydrogen is responsible for basicity, and the oxoacid, which have more number of POH bond, is more basic than the one with less number of POH bonds. And if our oxoacid contains two POH bonds, then it was dibasic. And when it contains three POH bonds, then it is tribasic, and so on. Okay, so these two are the most important ones. Sometimes a question asked from these as well. Now let us see what are the oxoacids of the phosphorus in detail. There are two nomenclature of the oxoacids of phosphorus, and these are ic acid and us acid. And based on this, we have two series of the oxoacids of the phosphorus. Now let us see what does this ic acid means. Here, phosphorus is present in higher oxidation state, and that higher oxidation state could be +4 और +5. यहाँ पे जब भी हमारा फॉस्फोरस हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा किसी भी ऑक्सो एसिड में, देन उस ऑक्सो एसिड का जो नेम होगा वो इक एसिड से एंड होगा. ओके, नाउ व्हेन द फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, and that lower oxidation state can be +1 or +3, then the name of the oxoacid ends with us acid. And based on this ic acid and us acid, we have two series of the oxoacid of phosphorus, ic acid series and the us acid series. Now let us see what are the members of this ic acid series. The first member of this ic acid series is the phosphoric acid, and from this phosphoric acid only we can derive the other member of this series. And the other member of this series is, say, metaphosphoric acid. And one point to remember is this metaphosphoric acid, phosphoric, sorry for the spelling mistake, phosphoric acid. And this metaphosphoric acid exists in two forms, linear polymeric form and cyclic trimeric form. Cyclic trimeric form and the linear polymeric form. Now the third oxoacid of this series is pyrophosphoric acid. Fourth is peroxo monophosphoric acid. Here, this oxo words means the oxygen-oxygen linkage. Okay, the fifth member of this series is hypophosphoric acid. Now let us discuss what are the members of this us acid series. The first member of this us acid series is phosphorus acid. And here also we can derive other member of this series from this phosphorus acid only, and those are pyrophosphorus acid and hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. Now let us discuss what are the structure of these ic acid series acid and us acid series acid in detail. First, let us discuss what are the structure and the formula of the ic acid series member. So first member here is phosphoric acid, and the formula for this phosphoric acid is H3PO4. H3PO4. अब हमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी ऑक्सो एसिड हो उसके अंदर ये चीज तो हमें सबसे पहले ड्रॉ करनी है. क्या? P डबल बॉन्ड O एंड OH. नाउ सी, इस फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन है, 1 फॉस्फोरस एंड 4 ऑक्सीजन है. देखो 2 ऑक्सीजन कंप्लीट हो गए.
और हमें पता है टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे हमें 2 ऑक्सीजन लगाने और 2 हाइड्रोजन कंप्लीट करने, तो हम यहाँ पे दोनों ही OH लगा देंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द phosphoric acid and the other name for this phosphoric acid is orthophosphoric acid. Okay, here the oxidation state of phosphorus is +5. Now let us discuss the second member of this series, which is the metaphosphoric acid. Metaphosphoric acid. And अब हमने क्या डिस्कस किया था पहले कि ये वर्ड मेटा क्या मीन करता है। मेटा मीन्स लॉस ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। अब 1 वाटर मॉलिक्यूल का लॉस किस में से, इस फॉस्फोरिक एसिड में से। H3PO4 में से जब आप 1 H2O माइनस कर दोगे, आपके पास क्या फॉर्मूला बच जाएगा, इट इज HPO3, यही बन जाएगा। अब हमने क्या डिस्कस किया कि मेटाफॉस्फोरिक एसिड के 2 फॉर्म्स पॉसिबल हैं। कौन से 2 फॉर्म्स पॉसिबल है। नंबर 1 इज लीनियर पॉलीमर फॉर्म, और पॉलीमर में आपको पता है कि कितने भी लिंकेजेस हो सकते हैं, से कि हमारे पास n यूनिट्स हैं हमारे HPO3 के। सो हियर द फॉर्मूला बिकम्स HPO3 के n units. Okay, and the second form that we had discussed is cyclic trimeric form. Cyclic trimeric form. एंड ट्राइमर में आपको पता है कि क्या होते हैं, 3 यूनिट्स। ट्राइमर कंसिस्ट ऑफ 3 यूनिट्स ना। सो द फॉर्मूला फॉर द साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO3 whole 3. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दीज टू। लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म, लीनियर पॉलीमेरिक फॉर्म है, सो हम ड्रॉ कर देंगे। हमें पता है सबसे पहले कि क्या आएगा, P डबल बॉन्ड O तो आएगा ही, देन एक OH भी आएगा। Now H3HPO3, 3 ऑक्सीजन। सो अब ये पॉलीमर हमें बनाना है, सो हम यहाँ पे ऐसे कर देंगे। पॉलीमर बनाना था तो ये अब हम नेक्स्ट यूनिट बनाएंगे, P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, OH. Okay, and now these two got joined to form a polymer. Third unit, P double bond O, OH, and oxygen. Okay, these two form bond. Now, so on. Okay, so this is the structure of the linear polymeric form of the metaphosphoric acid. Okay, now let us see what is the structure of this cyclic trimeric form. इसको करने के लिए आप सबसे पहले पता है 3 फॉस्फोरिक एसिड की यूनिट्स बना लो, हम फिर देखेंगे। ओके, सबसे पहले आप क्या बना लो, POH, एक और P डबल बॉन्ड O, OH, एंड वन मोर P डबल बॉन्ड O, OH। अब इसको आप ओपन कर लो, HPO3 होल थ्राइस को जब हम ओपन कर लेंगे तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा H3P3O9। ओके, अब ऑक्सीजन 9 करने हैं। देखो P3 हमने कर चुके, H3 भी हम कर चुके, अब हमें बस ऑक्सीजन 9 करने हैं। तो जब हम इनको ऑक्सीजन यूनिट से ज्वाइन कर देंगे, सो हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द साइक्लिक ट्राइमर ऑफ द मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अब इसको कंफर्म करने के लिए हम एक बार काउंट कर लेते हैं। देखो H3, P3, ऑक्सीजन 9 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ मेटाफॉस्फोरिक एसिड। नाउ लेट अस सी द other acid of this series, which is the pyrophosphoric acid. Third is pyrophosphoric acid, and the word pyro means the loss of water molecule when 2 units of some compound condenses. So here pyrophosphoric acid.
Now let us draw 2 units of our phosphoric acid, and our phosphoric acid is P double bond O, OH, OH and OH. Let us draw the another unit of this phosphoric acid. And now, when these two condenses and a water molecule got lost from here, suppose this water molecule got lost, then the resulting structure formed is our pyrophosphoric acid, P double bond O, O, P double bond O, OH, OH, OH and OH. This is the structure of the pyrophosphoric acid, where the phosphorus is present in the +5 oxidation state. This is also +5. This is also +5. Here the oxidation state of phosphorus is +5. Now let us discuss the fourth oxoacid of phosphorus of Oxoacid series, which is the hypophosphoric acid. And this hypophosphoric acid could form when one oxygen molecule got lost from this pyrophosphoric acid. And when one oxygen molecule got lost from this, and say कि ये वाला ऑक्सीजन लॉस हो गया, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा hypophosphoric acid, and this is the structure of our hypophosphoric acid. Okay, and here the oxidation state of our phosphorus is +4 for both phosphorus atom. Okay, now let us see the fifth oxoacid of this series, which is the peroxomonophosphoric acid. Peroxomonophosphoric acid. And this phosphoric acid got formed when oxygen got inserted in the phosphoric acid. This is the structure of our phosphoric acid, and when we insert oxygen to it, say mono na, so we insert only one oxygen atom here, and when we insert oxygen here, this is the structure of our peroxomonophosphoric acid, and here also the oxidation state of our phosphorus is +5. Now let us see the second series of the oxoacids of phosphorus, which is the Oxoacid series. And the first member of this Oxoacid series is our phosphorus acid. And the formula for this phosphorus acid is H3PO3. And now let us know what is the structure of this acid. Structure is, first we have to draw P double bond O, 1 OH. Now H3PO3. एक और oxygen. So this is the structure of H3PO3, where the oxidation state of the phosphorus is +3. Okay, the other name for this phosphorus acid is orthophosphorus acid and the phosphonic acid. Phosphonic acid. Okay, this is important. Phosphonic acid is the other name for the phosphorus acid. Okay. Now let us discuss the second member of this series of oxoacids, and that is the hypophosphorus acid. Hypophosphorus acid. And इसका फॉर्मूला क्या होगा? जब हम phosphorus acid में से one oxygen को remove कर देंगे, so its formula is H3PO2, and the structure is P double bond O, OH, H and H. Okay, this is the structure of the hypophosphorus acid, where the oxidation state of phosphorus is +1.
Okay. Now let us discuss the third acid of this series, which is the pyrophosphorus acid. And this pyrophosphorus acid got formed when 2 units of phosphorus acid combine and condenses and lose one water molecule. Okay, pyrophosphorus acid. Now let us draw the 2 units of our phosphorus acid. POH, H plus P double bond O, OH, OH and H. And when one water molecule got lost from here, say this unit got lost, H2O got lost, then the resulting structure is the structure of the pyrophosphorus acid. P double bond O, O, P double bond O, OH, H, OH and H. This is the structure of the pyrophosphorus acid, and here the oxidation state of both the phosphorus atom is +3. Okay, so these are the 2 series of the oxoacids of phosphorus. This table summarizes our whole discussion on the oxoacids of phosphorus, and this table is taken from class 12 NCERT book because sometimes in some competitive exams like CSIR NET, IIT JAM, JEE and NEET, question directly asked from this table, and the examiner asked whether our oxoacid contains one phosphorus hydroxy bond. How many? They asked on number of the POH, PH and P double bond bonds in the oxoacid. So this table is important to summarize our whole discussion. Okay, that's all for this video. Please do subscribe the channel and thank you for watching. Stay safe, stay healthy and be positive.